Okay, fine. So today we'll start with chapter 1.2, which is a synopsis, the Swiss family Robinson. Okay. Now this chapter is actually very big. So please make sure that you keep writing meanings also, because इसमें बहुत सारे new words है. We'll go through many new words in this chapter. So make sure you're writing all the meanings. Also, while you submit homework, please show that page also जिसमें आपने ये सारे meanings लिखे. So I'll get to know that okay, you were writing meanings. Okay. Yeah. So starting with the chapter, the Swiss family Robinson is a well-known adventure. Now, okay, before starting, what do you mean by synopsis? Anyone? What does synopsis means? Any idea? Okay. So what does synopsis means, bacha? It is a summary. Okay, it can be a summary of either a writing or a play. कि कोई play है उसका summary या कोई writing का summary उसको हम बोलते हैं synopsis. So again today we will see the synopsis of the Swiss family Robinson. ये जो Swiss family Robinson है आज उनका हम synopsis देखेंगे, summary देखेंगे. Okay. The Swiss family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into graphic novels and films. ठीक है? एक minute. Yeah. So the Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel. Okay, ये एक novel है which is an adventure novel. Now, what do you mean by adventure? Anyone? What does adventure mean? Exploration. Exploration. Yeah, you can say unusual experience, right? So it is the Swiss Family Robinson kya hai? It is an adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has been made into graphic novels and films. And फिर जब novel ही इतनी famous हो गई तो लोगों ने उसे फिर किस में convert किया? फिर films में भी उसे convert किया. The novel, written by Swiss clergyman Johann David Wyss, is not just an adventure, it aims at teaching young people values like self reliance, determination, love for your family, cooperation, and prudent use of resources. ठीक है, the writer है उनका photo you can see over here onto the right. The writer over here is Swiss clergyman Johann David Wyss. ठीक है, and what is this chapter about? See, it is not just an adventure. Okay? सिर्फ adventure नहीं है. It is not just an unusual experience, but over here you will learn values like self-reliance. What does it means by self-reliance? सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है, कि आपको कैसे खुद पे ही डिपेंड करना है. सेल्फ डिपेंडेंट. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन इज अगेन फर्म और फोकस्ड. बच्चा मीनिंग्स लिखते जाओ हाँ सब लोग. सो व्हाट डज दिस चैप्टर विल टीच अस? इट इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर. ठीक है, ये एक नॉवेल है वो तो ठीक है, बट उसके साइड बाय साइड विल लर्न values like self-reliance, that how you can depend on yourself and not on others, how you can be determined, that is formed of focus, and it will also teach you qualities like love for your family, cooperation, and prudent use of resources. ठीक है, prudent is careful और sensible. ठीक है, careful use of resources या एकदम sensibly आप कैसे resources को use कर सकते हो. It also has good lessons relevant in natural science, good husbandry, and even mathematics. ठीक है, और इन ये chapter से you will also learn lessons which are related to natural science, mathematics, and good husbandry. What do you mean by good husbandry? Anyone? Okay, it means farming, or you can say proper use of something. ठीक है, the good husbandry को you can consider as a farming या proper use or a suitable use of a object. ठीक है, यहाँ तक ये clear है? Yes, ma'am. Okay.
Okay, so now we'll start. Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. ठीक है कि यहाँ पे ये चैप्टर में ये नॉवल में यू माइट फाइंड सम एलिमेंट्स, कोई ऐसी चीजें जिससे आपको पता चलेगा कि वाह ये तो सर्टेन एक्सटेंट तक रियलिटी है, राइट, कि ये तो हमारे साथ भी रियल लाइफ में होता है, बट एट द एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इट इज जस्ट अ वर्क ऑफ फिक्शन. ये सिर्फ एक फिक्शन है, ये सिर्फ एक स्टोरी है, एंड दैट इज मेड ओनली फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंड इट इज नॉट अ फैक्ट फाइल के ये कोई रियल चीज नहीं है. गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी. तो ये जो पूरा है जो आज हम पढ़ने वाले, ये किसका है? स्विस फैमिली रॉबिन्सन. सयंतन या स्विस फैमिली रॉबिन्सन, जिसका आज हम सिनॉप्सिस पढ़ने वाले. So given below is just a synopsis. It is an outline of its basic story. So we'll start with the story now. William, Elizabeth, and the children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. The other passengers evacuated without them. William and his family, including the young children that are Fritz, Ernest, Jack, and Franz, were left to survive alone. They weathered the great storm waiting in the ship hold. ठीक है? So this story is about William and Elizabeth, the main, uncle auntie आप बोल सकते हो कि William यहाँ पे है, Elizabeth ये है, and उनके बच्चों के बारे में. So they were traveling into a ship when the ship was caught in a great storm. ठीक है कि storm में वो ship अटक गई थी. Now what other passengers did? They evacuated without them. What do you mean by evacuated? Evacuated is they left them alone. ठीक है कि left them, या or you can say to move to a safer place. तो जो बाकी के passengers थे, they moved to a safer place without them. So these guys were the only one who were into ship. William and his family. So you can see William over here. This is Elizabeth and unke ye family children. So what are the children name? Fritz, Ernest, Jack, and Franz. They all were left to survive alone, and they were the only one who were left in the ship. They weathered the great storm waiting in the ship's hold. ठीक है, weathered मतलब क्या बच्चा हुआ here? To realize, or they understood now that the great storm waiting in the ship hold, के ये जो हम ship में हैं तो ये storm कभी भी हम पर आ सकता है, and we can go into मतलब हमें इनका face करना पड़ेगा. Okay, we need to face this. So now they realize that this great storm can anytime attack us. Clear it now? Yes, miss. Yes, Okay. Yeah. The ship survived the night and the family themselves within sight of a tropical desert island. ठीक है, but finally क्या हो गया कि कैसे भी करके ये लोग ने ship ने survive किया entire night, and the family found themselves within the sight of a tropical desert island. और ये family कहाँ पे जाके पहुंच गई थी बच्चा? एक कौन से तो desert island पे जाके पहुंच गई थी. The next morning, they decided to get to the island. They could see beyond the reef. Now, what do you mean by beyond the reef? Beyond the reef is to the opposite side. कि ये लोग जहाँ पे रुके थे एक desert पे, उनके opposite side they could see an island, and that is why they decided to go to that island. Okay, with much effort, they constructed a vessel out of tube. Now, what does tube means over here? Tube is it is something like a plastic container. ठीक है, एक plastic container जैसा होता है जिसमें lid होती है, जिसमें ढक्कन होता है, and उसमें आप food या कोई other materials store कर सकते हो. तो उन्होंने क्या किया? वो tubes में से they made vessels. Okay, they made vessels out of those tubes. After they filled the tubes with food and ammunition, all other article of value they could safely carry, they rowed towards the island. तो फिर वो ट्यूब में से वेसल बनाया और वो वेसल में उन्होंने क्या क्या स्टोर किया? Food and ammunition. Now what do you mean by ammunition? Meanings लिखते जाना. हाँ बच्चा,
या सप्लाई ऑफ बुलेट्स और गन्स, जो हम गोला बारूद बोलते हैं ना वैसे। तो एम्यूनिशन, अभी शिप है, इतनी बड़ी शिप है ना, तो उसमें ये सारा मटेरियल रहता ही है। तो उन्होंने क्या किया, वो वेसल में, वो ट्यूब में उन्होंने फूड और एम्यूनिशन स्टोर किया अपने साथ, सो दैट दे कुड कैरी इट। they rove towards the island, and फिर जो opposite side, जो उनको beyond the reef opposite side जो island दिख रहा था, वहां पे they started going. So rove this, they went towards the island. Two dogs from the ship named Turk and Juno swam besides them. The ship cargo of livestock, guns and powder, carpentry tools, books, a disassembled peanuts and provisions had also arrived. ठीक है, तो अभी क्या क्या था वो बुक में सी वहां पे, सॉरी, टू डॉग्स फ्रॉम द शिप, तो वो शिप में उनके साथ दो डॉग्स भी थे, वन वॉज टर्क एंड वन वॉज जूनो। ठीक है, तो ये लोग भी उनके साथ वो ऑपोजिट आइलैंड में जा रहे थे। नाउ द शिप्स कार्गो of livestock, तो शिप में कौन कौन सी मटेरियल थी, they had livestock. Now what do you mean by livestock, anyone? यूजफुल थिंग्स, जो हमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आए व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग, so that could be useful to you. So livestock is something which is useful. Okay, यूजफुल थिंग्स आप लिख सकते हो। गन्स था, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा, एम्यूनिशन, वहां पे गन्स था, गन एंड पाउडर। कारपेंट्री टूल्स, कभी कभी कारपेंट्री टूल्स भी रहते हैं, बिकॉज ये सारे अगर कोई पार्ट इनका डिस्ट्रॉय हो जाए या निकल जाए, तो उसके लिए दे हैव कारपेंट्री टूल्स फॉर अ बैकअप। दे हैव बुक्स, a disassembled penis. Now what do you mean by a disassembled penis? ये penis is छोटा सा ship, ठीक है, and disassembled मतलब टूटा फूटा हुआ। तो इतनी बड़ी ship थी उनकी, उसमें as a backup उसके अंदर एक ऐसी छोटी सी ship भी थी। तो understood what do you mean by disassembled penis? It is like a short ship. Yeah, and provisions had also survived. Provisions क्या हो गया? Provisions is supply of food and drink. Okay, कि जब आप कोई short journey पे जा रहे हो, when you are going through a short journey, so they have supply of food and drinks. So that is known as provision. तो ये लोग जब opposite side beyond the reef जो island में जा रहे थे, तो इतना सारा सामान खुद के साथ लेके गए. What all did they took? They took food, ammunition, they had two dogs with themselves. Now यहाँ पे ship के cargo के बारे में बताया था. Ship cargo was filled with livestock, gunpowders, carpentry tools, book, a disassembled peanuts and provision. Clear बच्चा लोग यहाँ तक? Yes. Yes. Okay. Over the Miss, next, Miss, yeah, can you please tell the meaning of provisions? provisions. Yeah, but the provisions is supply of food and drink, especially when you are on a short journey. तो आप लिख सकते हो supply of food and drink. ठीक है? Okay, Miss, thank you. Okay. Yeah. Over the next few days, William, जो father थे, attached the floatable old kegs to one another and built a bow that curved around them. The family had landed successfully on the island. They set up a tent and softened the floor with armloads of grasses that cut and spread to serve as their beds. तो अभी next few days क्या किया, वो लोग आ गए, जो opposite island उनको दिख रहा था वहां पे वो लोग आ गए. Now जो father थे विलियम, उन्होंने क्या किया, floatable old kegs. Now what do you mean by kegs? बच्चा ये देखो यहाँ पे picture है. This kegs is like a round container जिसमें आप beer store करते हो. ठीक है, जो beer होती है वो उसमें आप store करते हो, तो that is known as kegs. तो उसके डैड ने क्या किया, जो ऐसे old kegs पड़े थे शिप में, उनको सबको कलेक्ट किया and bow that curved around them. ठीक है, and जो bow and arrow का bow होता है उसको उनसे कवर कर लिया. ठीक है, the family had now landed successfully on the island. के वो जो opposite side island था वहां पे वो लोग successfully land हो गए. They set up a tent, वहां पे उन्होंने tent बनाया, and they softened the floor with arm loads. Now what do you mean by arm loads?
the things which you can carry in your one hand. ठीक है, arm loads is like things which can be carried by you in your hand. तो वो arm loads में उन्होंने बहुत सारे grasses carry किए थे जब वो जा रहे थे वो island में, तो उन्होंने बहुत सारे grasses carry किए थे एंड उसी को फिर उन्होंने कट शॉट करके ऐसे स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया as their beds. So you can see floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. And उसी grass को उन्होंने as a bed बिछा दिया. Clear बच्चा लोग? Yes, miss. Okay. Yes. Okay. They came to a grove of trees. One tree grew what looked like a god on its trunk. The father told Fritz the gods would make excellent bowls and spoons and they cut them into various utensils. Okay? So now they came to a grove of trees. What do you mean by groove? Anyone? Groove? Bunch. या ग्रुप या बंच. तो ग्रुप मतलब क्या? स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज या बंच ऑफ ट्रीज. ठीक है, तो वहां पे वो कहाँ पे आ गए? या they came to a group of trees. तो एक ट्री ऐसा लग रहा था which look like gods. Gods over here means bottle guard, जो हम लॉकी बोलते हैं ना, लॉकी. यहाँ पे फोटो दिया है देखो. तो एक ट्री है ना, वो ऐसे दिख रहे थे उनके, उनका स्ट्रक्चर ऐसा था. समझा? गॉड्स जो बॉटल गार्ड हम लोग बोलते हैं ना. Yes, miss. या तो ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था. तो व्हाट फादर सेड टू फ्रिट्ज, फादर ने उनके एक बच्चे को बोला कि ये जो गॉड्स है ये हमें एक्सीलेंट बाउल्स एंड स्पून्स बनाने के लिए काम आएंगे. फिर इनको कट करके उन्होंने वेरियस टाइप्स के यूटेंसिल्स बनाए. ओके, सो ओवर हियर हम लोग क्या देख रहे हैं? वी आर रीडिंग अ स्टोरी, अ सिनॉप्सिस, जहाँ पे अ फैमिली हैज लैंडेड टुवर्ड्स एन आइलैंड. वो आइलैंड की तरफ लैंड हो गए हैं एंड नाउ दे डोंट नो, like they were traveling into ship, they faced a storm and they could just land at the island. Now they don't know what to do, right? इतना सब सब बर्तन कपड़ा लेके तो हम नहीं घूमते. so now they are trying to survive there. तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे उन्होंने वो जो ये था ट्यूब्स था उसमें से कंटेनर बनाया, फिर अभी बॉटल गार्ड में से उन्होंने यूटेंसिल्स बनाए. समझा? तो अभी हम आगे जाते हैं. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. The current camp was not only exposed but also very dry and hot. जो उनकी वाइफ थी विलियम की, उन्होंने उनको क्या इन्फॉर्म किया? दैट दिस प्लेस इज नॉट अ सेफर प्लेस. हम सिर्फ एक आइलैंड पे रह रहे हैं बट दिस आइलैंड इज वेरी मच एक्सपोज. ठीक है, कि यहाँ पे आजू बाजू कुछ नहीं है एंड इट इज फुल्ली ओपन, लाइक पूरा खुला है. कोई भी आके एनिमल या कोई भी हम पे अटैक कर सकता है. So this is exposed and it is very dry and hot over here. ठीक है, कि एक तो ऑलरेडी बहुत सूखा है, खुला भी है, plus it is very hot also. If they built a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. ठीक है, तो उनकी मॉम क्या सजेस्ट करती है कि एक बड़ा सा जो लंबा सा ट्री होगा ना, उसके ऊपर एक हम हाउस बना देते हैं so that we would be safe from jackals. Now what is jackals बच्चा? It is a wild animal which looks similar like dog. ठीक है, डॉग जैसा दिखता है बट इट इज अ वाइल्ड एनिमल. उसकी मॉम बोलती है कि ये जैकल जाके कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं. सो वी शुड मेक अ हाउस ऑन टू अ लार्ज ट्री सो दैट इट इज बिट सेफर. क्लियर यहाँ तक? Yes, miss. ओके. She described a perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in diameter. The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for a structure. ठीक है, तो उसकी मम्मा ने एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसा वो प्लेस होना चाहिए, कैसा ट्री होना चाहिए, कैसा हाउस होना चाहिए. ठीक है, तो जो ट्री बनाने हैं उनको, जो घर बनाना है, उसका ट्रंक जो ब्राउन पार्ट होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नियरली 40 फीट इन डायमीटर. तो इतना पौड़ा, मतलब वो इतना बड़ा होना चाहिए उसका ट्रंक, दैट द डायमीटर शुड बी 40 फीट. द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग
and extended straight out from the trunk, making them perfect platform for a structure. और उसके branches कैसे होने चाहिए? एकदम long and extended so that they can make a proper structure. So this was the description which was given by Elizabeth to make a house to William. ठीक है, यहाँ तक समझा बच्चा लोग? Yes, Miss. Yes. Yes, miss. Okay. Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. ठीक है, and जब वो लोग decide कर रहे थे कि branch का height कैसा होना चाहिए, because mom ने बोला था कि branch कैसे चाहिए, extended और बड़े चाहिए. ठीक है, तो जब वो determine कर रहे थे तो father ने बच्चे लोगों को क्या सिखाया कि ये branches के through, ये bamboos के through आप लोग कैसे triangles को measure कर सकते हो. That was something which was taught by William to his sons. He measured a defined distance from the trunk. Then he calculated angles using several measure rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. और फिर वो bamboo से उन्होंने calculate किया, and then he came to a conclusion that this branch, जो lowest branch था, वो 30 feet दूर था ground से. वैसे the men knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. Thus they created their ladder. ठीक है, तो if you can see in the picture, यहाँ पे bamboos थे, उन्होंने bamboos को ऐसे horizontal place किया, and फिर with the help of rope they created a ladder for themselves. Understood? Yes, Miss. Yes, Miss. Father returned to the beach and collected Tanish, can you please mute yourself? Yeah. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would. क्या हो रहा है यार? Okay. Father returned to the beach and collected driftwood, thinking it would be perfect to build a sledge on runners through than wheel. Later they used it to transport material. तो father ने क्या किया, वो जाके beach पे गए to collect driftwood. Now what do you mean by driftwood? Driftwood is pieces of wood जो पानी में float होते हैं, okay, and फिर float होते होते sand पे ऐसे corner पे जमा हो जाते हैं. So that is called as driftwood. So if you want to write the meaning, you can write it as pieces of wood which are floating on sea and which are washed away. Okay, so basically driftwood is pieces of wood which floats on water and जो wash off होके आके sand पे collect हो जाता है. तो father वो जाके ऐसे woods collect करने को गए. Why? Because they wanted to build a sledge. Now what do you mean by sledge? See, यहाँ पे I have given a picture. Sledges, vehicle without wheels. जो आप स्नो, यू माइट हैव सीन, अगर कोई क्रिसमस के टाइम पे सांता कैसे आता है या रेनडियर्स के साथ ये सब अटैच्ड होता है. यू मस्ट हैव सीन दिस इन स्नो रीजन्स, बिकॉज वहां पे उनको व्हील्स की जरूरत, या उनको व्हील्स की जरूरत नहीं पड़ती. तो उन्होंने ऐसा एक स्लेज बनाया, ओके, ऑन रनर्स रादर देन व्हील्स, और उसमें व्हील्स अटैच नहीं किए. ऐसा उन्होंने वो वुड से, वो स्ट्रक्चर से बनाया. लेटर दे यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, और फिर उन्होंने उसको क्यों यूज किया? सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने ये बनाया. ठीक है, Yes. okay. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. तो ये सब तो अंकल और जो विलियम थे और उनके जो सन्स थे वो ये सब कर रहे थे. So what was mother doing there? She was planting, क्योंकि अभी
ये लोग को यहाँ पे सरवाइव करना है। ये अगेन एज आई सेड इट इज अ स्टोरी, राइट, अ फिक्शन, ऐसा कुछ रियल स्टोरी नहीं है। वहां पे वही बताया है दैट नाउ दे नीड टू सरवाइव। तो कैसे वो सारी चीजें बना रहे थे, जैसे हमने देखा अंकल ने यूटेंसिल्स बनाए बॉटल गार्ड से, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए वुड से ये बनाया। तो व्हाट मदर वाज डूइंग, शी वाज प्लांट, अभी वहां पे तो क्या मार्केट विकेट होगा नहीं आइलैंड्स पे, तो फूड कैसे वो व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट किया। सो शी सेड दैट जो उन्होंने प्लांट ग्रो करना स्टार्ट किया था वो अभी अच्छे खासे गार्डन में डेवलप्ड हो गया है। मतलब क्या कि वहां पे फ्रूट्स एंड प्लांट्स आना शुरू हो गए हैं। So what all she grew? Corn, melons, pumpkins, cucumbers were already growing. ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने grow की है। The next day, only the father and Fritz traveled to the woods, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit from which candles could be made. Okay, the next day Fritz and उनके जो father थे वो लोग travel कर रहे थे। वो लोग कोई ऐसे exotic plants के search में थे जिससे with a waxy fruit. Now what do you mean by waxy fruit, बच्चा लोग? Also, what do you mean by exotic plants? वो लोग exotic plants को search कर रहे थे। Exotic मतलब क्या होता है बच्चा? मिस स्पेशल या स्पेशल या अनयूजुअल, जो एकदम अनयूजुअल हो। तो वो ऐसे प्लांट के सर्च में थे विच इज समथिंग स्पेशल और अनयूजुअल, जिसको वैक्सी फ्रूट, वैक्सी ओवर हियर इज अगेन एन एडजेक्टिव विच इज गिवन टू डिस्क्राइब द फूड, लाइक कोट टाइप होना चाहिए, जिसके कोट निकलते हैं ना वैसे, so that is called as waxy fruit। तो जिनके कोटिंग से वो लोग क्या बना सके, they could make candle out of it। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Yes. Okay. Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap। और फिर जो फ्रिट्ज थे उनको क्या मिला, एक ऐसा ट्री मिला जो रबरी सैप, सैप मतलब ऐसा लिक्विड टाइप आप बोल सकते हो। तो वो लिक्विड टाइप ऐसा निकल रहा था वो फ्रूट में से, वैसा फ्रिट्ज ने डिस्कवर्ड किया। एंड फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स। ओके, एंड उनके डैड ने बोला कि ये जो रबरी सैप है इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बूट्स बना सकते हैं। क्लियर बच्चा लोग? मैं सब लास्ट आपने जो बोला वो कंटिन्यू कर सकते हो एक बार? या तो जो फ्रिट्ज थे, फ्रिट्ज एंड उनके डैड थे, दे वर इन सर्च ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स, सम अनयूजुअल प्लांट्स जिनके थ्रू वो कैंडल्स या ऐसा कुछ बना सके। दे वर सर्चिंग फॉर अ वैक्सी फ्रूट। वैक्सी ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव व्हिच इज गिवन टू डिस्क्राइब द फ्रूट। एंड देन जो फ्रिट्ज था, जो उनका son था, रबरी था, एंड फ्रॉम विच द क्लेम, फादर ने बताया कि ये जो रबरी सैप है उनसे हम बूट्स बना सकते हैं। क्लियर? यस मिस, थैंक यू। ओके, वेलकम बच्चा। नेक्स्ट, thinking ahead of the next winter, father decided to create a place safe from the elements, a strong storage spot to protect themselves and their belongings. Fritz came up with the idea of a cave. Not finding one, they thought of carving their own cave in the rock, abutting the campaign in the rock. Own cave in the rock, abutting the campaign साइड। तभी विंटर आने वाला था एंड फादर ने बोला कि ऐसे प्लेस में रहना इट्स नॉट सेफ, बिकॉज एक ऑलरेडी हम लोग आइलैंड के क्लोज रह रहे हैं, तो विंटर में ठंडी लग सकता है एंड प्लेस एक सेफर प्लेस चाहिए हमको रहने के लिए। तो व्हाट डिड फादर डिसाइडेड कि मैं कोई ऐसा ऐसा जगह पे जाके हमें एक घर बनाना पड़ेगा विच वुड बी अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट होना चाहिए एंड कुछ ऐसी चीजें जिससे वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, लाइक अगर कुछ वुड्स जला के वो फायर कर सके सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द विंड्स। तो समथिंग लाइक दैट फादर वाज थिंकिंग। तो फ्रिट्ज ने क्या आइडिया दिया कि हम क्यों ना अपना एक केव बना लेते, हम खुद ही का अपना एक केव बना लेते हैं। बट वहां पे सिंस इट वाज आइलैंड, यू डोंट फाइंड केव्स एंड समथिंग लाइक दैट,
तो वहां पे कोई भी केव नहीं था. सी नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक, अब्यूटिंग देयर कैंप साइट. तो वहां पे तो कोई केव उनको मिला नहीं, बट जस्ट उनके आजू बाजू है ना, दे हैड अ रॉक. यू कैन सी अ पिक्चर. तो ऐसा रॉक टाइप स्ट्रक्चर था वहां पे. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यही स्ट्रक्चर में, यही रॉक के स्ट्रक्चर में वी वुड क्रिएट आवर ओन केव. क्लियर बचा लो? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. On the smooth face of the rock, father marked the dimensions for an opening, and they picked away at the hard surfaces with their axes, chisels, hammers and shovels. तो फिर डैड ने क्या किया, वो गए वो रॉक पे, डायमेंशन बनाने लगे कि इस टाइप का हमारा एंट्री होगा, एंट्रेंस होगा, ऐसे रूम्स एंड समथिंग लाइक दैट. तो वो वहां पे डायमेंशंस बनाने लगे. तो वो डायमेंशंस बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स लेके गए अपने साथ? ही टुक एक्सिस. एक्सिस सबको पता है क्या होता है बच्चा लोग? Yes, ma'am. क्या होता Yes, है? miss. कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी. Kuladi. या, एक्सिस इज कुल्हाड़ी. चीजेस, चीजेस ओवर हियर मींस चेनी जिसको बोलते हैं ना हिंदी में. यहाँ पे आई हैव गिवन यू पिक्चर. सो दिस इज कॉल्ड एज चीजल, जिसको चेनी बोलते हैं. फिर हैमर्स. हैमर्स सबको पता है, हथौड़ी अपना, राइट? हैमर्स पता है ना सबको, हथौड़ी जो रहता है अपना वो. एंड Yes, miss. एंड शॉवेल्स. शॉवेल्स इज लाइक दिस, फावड़ा टाइप्स बोलते हैं ना, गार्डन में रहता है फावड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो. तो ये शॉवेल्स है. तो ये सब लेके डैड कहाँ पे चले गए? टू द हैमर्स एंड शॉवेल्स. या ये सारे इंस्ट्रूमेंट है. Chalo, next. Over the next several days, the family cut windows in the rock to allow for cross currents of air and for sunlight to enter the cave. अभी cave में घर बनाना it's not easy, right? पत्थर में cave बनाना तो पूरा उसको आपको carve करना पड़ता है. तो family next several days तक क्या कर रही थी? वो cave को ऐसे cut कर रही थी so that they can give a structure of window to that. Because अभी आप केव में रह रहे हो ठीक है, बट आपको रहने के लिए यू नीड क्रॉस करंट ऑफ एयर, राइट? क्रॉस करंट इज पासिंग वन बाय वन, के वहां पे हवा जाने के लिए, लाइट जाने के लिए आपको स्पेस चाहिए, राइट? तो वो फैमिली विंडोज के टाइप में उसको रॉक्स को कट कर रही थी सो दैट एयर और सनलाइट का फ्लो हो सके. When they had finished, they had 4 rooms complete with a fireplace. And finally, after days, उन्होंने वो rock में cave बनाया, which include 4 rooms and with a fireplace. Because जैसे dad ने पहले बताया कि winters आने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला अगर कुछ fireplace type रहेगा तो वो अच्छा पड़ेगा to protect themselves from ठंडी. तो वैसे उन्होंने एक fireplace भी बनाया. They now had a new winter home, and जो ये घर बनाया वो अभी विंटर को फेस करने के लिए रेडी था. Because of the low light, the cave house they had built felt oppressive. ठीक है, oppressive is uncomfortable, but वहां पे इतनी लाइट तो आ नहीं रही थी. क्रॉस करंट्स तो उन्होंने बना लिए एयर को पास करने के लिए, बट वो विंडोज के थ्रू क्या होगा बच्चा, के सुबह जब दिन का टाइम होगा, इन द मॉर्निंग टाइम ओनली द लाइट वुड बी विजिबल, राइट? बट नाइट में तो कोई लाइट आएगा नहीं. तो दैट इज वाई वो जो उनका विंटर हाउस था वो इट फेल्ट अप्रेसिव. अप्रेसिव इज अनकंफर्टेबल बिकॉज रात को इतनी लाइट नहीं आ पाती थी. वो विंडो से हवा तो आ जाती थी बट लाइट रात को नहीं आती थी. सो टू रेमेडी दिस, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए फादर एंड जैक rigged up a new light. They found a bamboo pole that would reach from the floor to the ceiling. Then, after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil clamp that they have rescued from the ship. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या किया बच्चा? इसका सोल्यूशन में उन्होंने क्या किया? सपोज ऐसा ऐसा इनका केव होगा सपोज, तो उन्होंने ऐसा बाम्बू लाया इतना बड़ा कि जो सीलिंग से लेके, सी यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फ्लोर टू द सीलिंग, तो यहाँ से फ्लोर से ऐसे सीलिंग जो उनका लास्ट एज है केव का वहां तक जा रहा था, ऐसा बाम्बू लेके आया. और फिर क्या किया, जैक जो उनका बच्चा था वो ऊपर चढ़ा. देखो, जैक क्लाइम टू द टॉप ऑफ द पोल एंड यहाँ पे उसने वो लार्ज
ऑयल जो था उनका ऑयल लैम्प वो यहाँ पे ऐसे हैंग कर दिया, सो दैट which they had rescued from the ship. और ये ऑयल लैम्प वो लोग ने कहाँ से लाया, जो शिप में जो सारे लाइव स्टॉक्स थे, जो काम की चीजें थी, उसमें एक उनको ऑयल लैम्प मिल गया. क्लियर बच्चा लोग? Yes, Yes. miss. Okay. One day they found that one of the family's hut had been completely destroyed and the cultivated fields around it has been trampled and ruined. Trampled मतलब क्या बच्चा? Trample मतलब to walk on something, and ruined तो आप लोगों को पता है. Ruined मतलब क्या होता है? खराब हो जाना. या खराब होना या डिस्ट्रॉय होना. तो वंस दे फाउंड आउट के जो उनके हट्स थे ना, आजू बाजू में जो हट्स बनाए थे, वो कंप्लीटली क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे, रूइंड हो गए थे. एंड जो फील्ड्स थे उनके, जो उन्होंने फील्ड्स, उनकी मम्मा ने जो फील्ड्स उगाए थे, वो भी क्या हो गए थे? ट्रैम्पल. ट्रैम्पल मतलब क्या? टू वॉक ऑन समथिंग. तो मे बी कोई एनिमल या वैसा कुछ आके उन्होंने पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. There were huge footmarks everywhere. ठीक है, सब जगह footmarks थे. Father saw massive damage to tree as well as many huge footprints which he identified as belonging to an elephant herd. और वो जो footprints थे उनके डैड को लग रहे थे कि ये elephant के हो सकते हैं, and maybe elephant ने आके ये पूरा जो हमारा fields है उसको destroy कर दिया. The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering the cultivated lands. They also finalized their ideas about the new residents. तो अभी ये तो वापस प्रॉब्लम है, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छे मेहनत से जो घर बनाया वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा था. So what father did, he was planning something. He was planning new things कि मैं कैसे ऐसा कुछ बनाऊं जिसके थ्रू ये वाइल्ड एनिमल्स अगर आए तो ये हमारे लैंड्स को डिस्ट्रॉय ना करे. एंड वो ऐसे सारे आइडिया क्या कर रहे थे? वो फाइनलाइज कर रहे थे कि कैसे अभी मैं कुछ नया डिफेंस बनाऊं जिसके थ्रू मेरे लैंड्स डिस्ट्रॉय ना हो. क्लियर बच्चा लोग? Yes, miss. Yes, ओके एवरीवन. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay, now the session will get over, so please start joining again. Okay. Yes, miss. Okay.